Hello guys, so from today onwards we are going to start a new series called Home Tuitions. So when I was a kid, I usually don't study tuitions. So my goal in this series is to teach class 9th mathematics whole syllabus, as you may be seeing in further years. So I will be teaching whole from NCRT exercise to extra questions. But first, our main objective is to cover NCRT, and then further we will be moving towards high level questions. Okay, so as this is an introductory video, so my name is Shubhangi Verma. I am gonna be a guide for this course. Okay, so let's get started. Number system, chapter 1, class 9th. So what is number system? Ever thought of counting something? कभी ना कभी तुमने कुछ ना कुछ काउंट करा ही होगा ना. तो what is that 1, 2, 3? Did we ever started from 0? 0, 1, 2, 3? No, na. So what is number is? What is natural number is? Counting numbers. Natural numbers are counting numbers. Like 1, 2, 3 and so on up to infinity. We never started from 0, right? Why we didn't start from 0? And why is 0 actually necessary? 0 is necessary. Like if we subtract 1 from 1, what will be left? So therefore 0 is necessary. Like if we have 2 chocolate and both are eaten by myself, then what quantity I will be left with? It's actually 0. So this how 0 was invented. And when we combine 0 with this natural number, what becomes is whole number, right? So what becomes is whole number. Whole numbers. They are basic operations, okay? This is starting from 0, 1, 2, 3, 4 and goes up to infinity, okay? Why we write here infinity? It's a sign like this. Infinity is an endless number because counting is endless procedure. So therefore this is an infinity sign. Maybe you should be new to this sign. So this is that. Now it's okay. We have the natural number, whole number. But what if we subtract 2 from minus 3? What if we subtract 2 from minus 3? Or simply 2 from 4? We will be getting a negative number. The collection of those negative numbers with natural number and whole number is collectively called integers. What it is called? Integers. Okay. What it is? Negative infinity to plus infinity. Any number like minus 1, minus 2, minus 5, plus 5, plus 6 and so on, right? This basically is a notation of N, this is a notation of W and this is a notation of Z. Now what comes next? Something like, what if we divide 2 by 3? What are we left with? Something, what if we divide 1 by 2? What are we left with? We are left with 0.5. Now which kind of number is it? It doesn't fall in the category of natural number, whole number and also integer. What kind of number it is? It is simply a decimal number. What it is? It is a decimal number. So we can conclude it as a rational number. This as a rational number. Now what is rational number? Here our chapter begins. Rational number represented by R. Rational number is nothing but a number that can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime integers. What are co-prime integers means? Neither P nor Q has a common multiple. Okay. Like if we write 2 upon 4. So they have a common multiple, that is 2. But when we divide it, it's become 1 by 2. That is a rational number. Every whole number and natural
rational number is a rational number. Like we have a set, then this, then this, then this. Okay. In further videos, we will be discussing about exercise 1.1 and other exercise. Our course will go on like first explanation of the topic, then the exercise, then explanation of the topics, then exercise. Thank you for today. Catch you up in the next one. If you like, don't forget to hit the like button and comment on this channel. Thank you.
So hello everyone, welcoming you to another video. So in this we are going to, where's my marker? Just a second, okay. In this we are going to study exercise 1.2 with some basic concepts, okay. Rational number. Mistakenly in my last video I have represented it with R, it was Q. Correct it, okay. If you are watching my series Landmalize, correct it please, okay. Now, if there is a rational number, there can be something. Can something be inverse of that? Can it be something like irrational numbers? Yes, there exist irrational numbers. Now, what are irrational numbers? Simply numbers that cannot be represented in the form of K upon Q are called irrational number. What are these numbers? We know by definitions. Number that cannot be represented in P upon Q. A rational number. What are these actually number? Remember the sign this. What was the sign? This was a sign of square root. So square root 2, square root 3 and so on are irrational number. Now you must be saying why these are irrational number. Coming on to this proof. Its proof is in class 10th. So I will not be telling you right now, but just for the sake of this, understand root 2 is an irrational number because we will be taking care of it in class 10th. Okay, now why is root 2 an irrational number? Because when I will be showing long division in further videos, when it is longly divided and there exists a number which comes to 1.41 and something, okay, which is non-terminating and non-repeating. Now what are these new terms you are talking about? We don't know what is non-terminating. Simply non-terminating means it when divided it will never end up with 0. It will never end up with 0. Non-terminating. These numbers are non-terminating in nature. So these are categorized into irrational numbers. Like when we divide 3 by 10, when we divide 10 by 3, we get 3.333 up to infinity times, right? 9, 1 left, again adding 0, point added 9 and so on. 3. This can be considered as 3.33 bar. Bar is the side of repeatedly that number is occurring, okay. Now combination of this rational and irrational is called real number. The combination of whole rational and irrational numbers are called real numbers. Real numbers. This is represented by R. If there are real numbers, there may be imaginary numbers. Yes, there are imaginary numbers. But these are part of class 11. Imaginary numbers, right? Imaginary numbers. These are part of class 11th. Here comes minus, iota and so on. Okay, there are many numbers which are minus root 2. These are all imaginary numbers. These do not exist in real life, but these is a part of class 11th. Okay. So coming on to the exercise 1.2. I am reading the questions. Hope you all have a book, okay. So this is exercise 1.2, right? State whether the following statement is true or false, okay. Every irrational number is a real number. As I just told you, every irrational number is a rational number. So this is true. Second, every point on the number line is in the form of root m, where root m is a natural number. This is false. Why? Because every point is in the number line is form of root m. No. Because if we write 2, it's okay on the number line, on a number line, this is an infinitely number line, then it's not always true because root 2 is equals to 1.41 and so on. It's continuing. Coming on to third, every real number is an irrational number. No.
every real number can be rational number also. So this third part is also false. Okay. Justify we can like real number is every real number 2 is a rational. 2 is a real number. It does not fall in under the category of irrational number. Okay. Coming on to question number 2. Are the square root of all positive integer irrational? No. If not, give an example of square root. Pythagoras theorem is basically an example of Pythagoras theorem. Okay. Okay. Question number 3. Show how root 5 can be represented on number line. I will be showing you in further lectures. In class 4, there is a homework for yourself. Class 3, question number 3 and question number 4 is a homework for yourself. These are very easy questions and these are not asked in anywhere in exams. Trust me. So, the question number 2, all the square roots of positive integer is rational. No. So, like, let me, 4, 5. Yes, so like 3 square plus 2 square. No, 3 square plus 4 square, yeah. So 3 square is 9, 9 plus 16, it's 25, which is a number of 5, which is square root of 5. So there how, hence we proved the question number 2. Okay, thank you for today. Like, share and subscribe. Thank you for watching. So hello everyone, welcoming you to another video on the chapter number system of class 9. Okay. Numbers are again classified into 2 parts. Okay, numbers are again classified into 2 parts, that are terminating, and the second one are non-terminating. Okay. What is this terminating and non-terminating? Coming on. The non-terminating is further divided into 2 parts. Non-terminating but repeating and non-terminating and not repeating. Let us suppose we have a number, okay, that is 24, okay, 24 divided by 2, like divide 24 by 2, okay, so 24 divided by 2, okay, so this 1 time and then 4 carry and then 2 times, right? This is 24 is divided by 2 12 times, okay. Let us take something smaller number, okay, like something in points and decimals and that, okay. Let's take 13. Let's divide 13 with 12, okay. 2 divided by 13, okay. Now 2, we know that 2 6 are 12. We know that 2 6 are 12. 1 is left as a remainder. But if we further divide it, taking the 0 and putting a point over here, it gets fully divided. This is what? This is the 2 should be multiplied by 6.5 to get 13. 2 should be multiplied by 6.5 to get 13. So what is this? When we divide any number with anything, if we get 0, it's simply a number that is a terminating number. What it is? A terminating. Divide anything with anything. If we get 0, it's a terminating number. Okay. Coming on non-terminating. Non-terminating, which divided till infinity, but we do not get an answer. Remainder 0. Let us take an example. 10 divided by 3. 3 3 are 9. Okay. 3 3 are 9. Remainder 1. We again, in terms of making it in the more wider form, we again put 0 over here, put point over here,
it again divided by 9, and this loop continues till infinity. This loop continues till infinity. Okay, this remainder again 1, and so on, right? So what is this? This is a non-terminating number. What is this? This is a non-terminating number. Now in this, which never ends with 0. Basic definition of non-terminating number is which never ends with 0. Okay. In further category, non-terminating but repeating, and non-terminating but and not repeating. This falls in the category of first one, non-terminating but repeating. It is repeating itself. It is repeating its value. This dot 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 can be further represents 3.3 bar. The number which starts barring, the number which starts repeating, we put a bar over that number. Okay. Okay. And non-terminating and non-repeating, let us discuss it also. Like 7 divided by 10. Okay, 7 divided by 10. 7 divided by 10. Everyone know 3 is a remainder. Okay, one time. Okay, now putting it 30 here. Okay, so you should get 28. 4 like point, because no 0 was here, this was the only digit. Put 0 over here, put point over here, it will divide 4 times. 2 left. Again 0, 7, 8, 7, okay, it's again get 2 times. Okay, 6. So this process goes on, and there is a no repeating number. This process goes on, and there is a no repeating number. So this is called non-terminating and non-repeating. There are many examples of it. There can be infinitely many numbers found between two numbers which are non-terminating and non-repeating. Getting the point? So in the next video we will be discussing about exercise 1.3. Thank you. Like, share, subscribe. Catch you up in the next one.
So hello everyone, welcoming you to another video of exercise 143 class 9th number system. Okay, so we were on question number 4, right? We need to start question number 4 and question number 3 we have done in our last previous classes. Okay, question number 4, which is express 0.999, the same thing which we used for question number 3. 0.9999 means 0.9 bar. Okay, is used in this question. Okay, express P upon Q. Are you surprised by your answer? With the teacher and the classmates discuss the answer makes sense. Okay, simply put x is equals to 0.99. Make it multiply by 10. 10x is equals to 9.9 bar. Okay. Write down here, right? Be in the between. Multiplying both the sides. Multiplying by 10 both the sides. Write down in this between. Okay. I'm writing because I'm explaining you. If you need to get marks, you need to write this line. Do not forget to write this line. Okay. Now what you need to do is 10x. Okay. Which is 9 plus 0.99 bar. Okay. Okay. Now what you need to do is, this is x, sending it here, 9x is equals to 9, x is equals to 1. Now in this question, again we are discussing with the teacher, like how can 9 and 9 be 1? This is the main concept. This is why it is written discuss with the teacher. Like 0.9 and 1, this difference of 0.1, but this can expressed it by this way. Okay. Coming on question number 5, what can the maximum number digit be repeating block? This is 1 upon 17. What you need to do is, I hope आप में से बहुत कम लोगों को 17 की टेबल आती होगी, लेकिन लर्न कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर है. इसमें है ना क्या होगा, आपको पूरा पेज भर जाएगा, आपको 17 में डिवाइड करना है, कम से कम 10 या फिर 15 डिजिट बाद आपका वो आएगा कि उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो उसका आपको रिपीट होना शुरू हो जाएगा. आएगा, रिपीटिंग आएगा, लेकिन 10 या फिर 14 पॉइंट्स के बाद आएगा. ठीक है ना? तो पहले आप वो क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले आप 17 की टेबल याद कीजिए, उसके बाद जो सॉल्व करने का करोगे तो ऐसा रहेगा आपके दिमाग में सही रहेगा ना, सही फिट होगा क्वेश्चन नंबर 7. Okay, coming on question number 16. Question number 6. Look at several examples in rational number p upon q, where p and q are integers, no common factor other than 1, having terminating decimal representation. Can you guess which property q must satisfy? You need to simply guess any number which q should not equals to 0. Any number, right? 2 upon 3, 5 upon 7. Many answers can be there in question number 6. Okay. Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expression are non-terminating and non-recurring. कोई भी मन से 3 एक्सप्रेशन ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसा ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, फर्स्ट हो गया, हम कोई भी लिख सकते हैं. अब लिख दो 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, ऐसे. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए. मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका पहले समझा दिया. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. ठीक है. तीसरा कुछ भी लिख दीजिए, 3 5 4 3 3 5 5 5 5, मेक इट 12. ओके, 5 5 4 4. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द 8th question of the exercise. Find 3 different irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11. Okay, what you need to do is, you need to 5 by 7 and 9 by 11 irrational number बनाना है आपको. ओके, पहले तो मैंने इसका क्या करेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंस कर लेंगे. ओके, क्योंकि 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर 77 आएगा. ठीक है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर हम इक्वल कर लेंगे, उसके बाद हम उसे पहले 77 टेबल भी मुझे भी नहीं आती, मुझे लगता है आपको भी नहीं आती होगी. ठीक है ना, तो फिर हम उस 77 को जो ऊपर डिजिट आएगी उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, पहले 5 by 7 की जो चीज बनेगी ना, जैसे आई थिंक आप मेरे वर्डिंग समझ रहे हो, जैसे 5 by 7 है और 9 by 11 है. 5 by 7 और 9 by 11 में दे रखा है. हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जो कि 77 आएगा. एलसीएम लेंगे
जो कि 77 आएगा। मैंने कैसे इतनी जल्दी क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इतनी जल्दी कैलकुलेट किया। प्राइम नंबर तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो इधर नंबर आएगा, लाइक इधर हम 77 बना रहे हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हम 11 से तो 55/77। पहले हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसे हम डिवाइड करके निकालेंगे। मुझे भी नहीं आती 77 डिवाइड, आपको भी नहीं आती होगी, तो इसे हम एक एक करके डिवाइड करके निकालेंगे। जो डिजिट आएगी, जो जहाँ से स्टार्ट हो रही हो उसको ऐसे बना दो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन जाएगा आपके रेशनल। इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी फॉर्म, सबका आंसर पूरी क्लास का डिफरेंट हो सकता है। नो नीड टू मैच योर आंसर शीट्स। ओके, गॉट गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा समझा देते हैं। ये जो नंबर आपका आ गया इसको इससे डिवाइड करो, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, ऐसे डिवाइड करिए, कर लिए डिवाइड। जो वैल्यू आई उसकी पहली 2 डिजिट सेम रहने दीजिए और पीछे बदल दीजिए, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे लगा दीजिए, आंसर। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर as irrational or irrational. Okay, so I hope everyone know that 23 is a 23 what 23 is a prime number. So anything inside root prime is considered as irrational. What it is? Irrational. The question number second, 225 root 225. I hope आपको स्क्वायर्स याद है। तो ये 15 का स्क्वायर होता है, किसका? 15 का। दिस इज अ रेशनल नंबर, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3 है ना, so it is 0.37, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 0.3796। ओके, तो मतलब इस बार नहीं लग रही, तो मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो चुका होगा। तो ये देख के ही बता सकते हैं कि रेशनल नंबर, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इसे देख के बता सकते हैं क्योंकि ये खत्म हो गया, इस पर कहीं बार नहीं लगा। तो क्या है ये आपका रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। और कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 7.4, लेट मी राइट इट। ओके, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 7.478, ओके 478 बार, तो इस पर बार लग रही है। So what it is? It is a rational number, but it is non-terminating but repeating. What it is? It is non-terminating but repeating. Coming on question number 5. Okay, this last question of the exercise. Happy? Are you guys happy? Must be happy. Okay, 1.101001. Okay, and 000 and so on. Okay, so this is a non-terminating and a non-repeating number which is simply termed as irrational. I hope you like the content. Thanks for watching. Do not forget to like, share and subscribe. So hello guys, welcoming you to another video of number system exercise 1.4. Okay, there are only 2 questions which are very easy. Okay, coming on to exercise 1.4. The very first question is about successive magnification. Visualize 3.765 on number line using successive magnification. Now what is successive? What is magnification? Leave it successive. What is actually magnification? Magnification is simply making a thing enlarge. Anything, any object enlarge. So that is what is magnification. Okay, now we need to, it's very simple, right? Like there are infinitely many numbers on number line, negative end as well as positive end. So what we need to do is we need to simply represent. Let me write the question. Okay, what we need to do is we need to simply represent. Okay, 3.765 using successive magnification. The successive magnification is nothing but there are 2 numbers, we need to maximize these 2. Okay, let us get started. Let's look at with the example. Okay, 3.7 comes in between of 3 and 4. We all know that, right? 3.7 comes in between of 3 and 4. So what we need to do is we need to first make a number line between
3 to 4, which contains 3.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Which contains, this is 3.2, this is 3.3, this is 3.4, this is 3.5, this is 3.6, this is 3.7, this is 3.8, and this is 3.9, and this is 4. So what we need to magnify it. Easily used kind of question doesn't ask an exam, but as it is an exercise question, we need to do it. We will simply make a magnifying glass over 3.7 and 3.8, okay, like this way. And what we need to do is we need to enlarge this. We need to enlarge this, okay. Okay, we need to enlarge this. We have enlarged 3.7 and 3.8, okay. Now 3.76, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. So 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79. This is 3.8. 3.76. These two numbers, right? These two numbers. What we need to do is we need to enlarge this. As this board is small, I am writing one number downside and other one upside. You can write in single way. Okay. Usually downside is written in most of the format. Okay. Now 7, 6, 5, right? 6, 5. Okay. What we do is 3.76 and 3.77, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769. Okay. So our number was 3.765. This was our number, right? So by this we have represented it on our number line. Okay. Now the question number 2. Okay. Visualize. I should have it down. Okay. Where is my? I got it. Question number 2. Coming on to question number 2. Okay. Yes. So question number 2 is visualize. Question number 2, visualize 4.26 bar on number line up to 4 decimal places. What we need to do is we need to simply, after decimal, we need to go consecutively up to 4 decimal places. Means what we need to plot? We need to simply plot 4.2626. What we need to plot is we need to plot this number on the number line. Let's get started. You can do it by successive magnification or directly, but as recommended by your teacher. Okay. Successive magnification is basic method, and directly we can represent it as like 4.26 to 6 here and 4.2627 here, and then on the number line. That is a direct method. Okay. If you can want it, so I can represent it with direct also. Okay. Means in the direct you need to, what we need to, last step जो था ना, last step बस वही वाला करना था अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो, और सक्सेसिव तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है. लास्ट वाले में अगर अब करता है बताता है ना. So this is 4.2 lies between 4 and 5, right? So 4.1, 4.2, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Okay. What you need to do is 4.2. This. You need to magnify this two. Okay. Okay.
This is, I'm doing it by successive magnification. Okay, 4.2 and 4.3, right? 4.3. 4.2 and 4.3. 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 4.21, 4.22, 4.23, 4.4, sorry, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29. What is 4.26? Like this one, okay? These two numbers. We need to magnify these two numbers, right? This is 4.26. This is 4.27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269. 262, right? So 4.262 here. We need to enlarge these two numbers, okay? This is the final step. I think this is visible, right? Let me check it, okay? Yes, this is visible, right? Right, this is visible. So what we need to do is we need to enlarge these two numbers, right? 4.262, right? These two. 4.262 and 4.6, 4.263. These two numbers. Now 1, make it 6, right? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629. Okay, got it? So if we need to do direct method, what we need to do is we need to simply represent the last one. That is direct method, and this is a successive magnification. If we make a circle over it and just put it like this, and put it like something like this, so this is successive magnification. Okay. Thank you. Catch you up in the next one. Hope you like the content. Like, share, subscribe. So hello everyone, welcome you to another video. In this video, we are going to do exercise 1.5, number system class 9. Okay, so let's get started. So the very first question is, classify the number as rational or irrational. As I already told you how to classify a number is rational and irrational. We need to simply, if a number is non-terminating and non-repeating, the number is termed as irrational. What I said, if the number is non-terminating and non-repeating, that number is called irrational number. Okay. So coming on question number first, part first. Question number first, part first. 2 minus root 5. So here 2. If we take 2 separately, 2 is a rational number, but minus root 5 is an irrational number. How? Why? Because root 5, when expanded by long division method, it gets a number which is non-terminating and non-repeating. So first number is irrational. Coming on to the second number,
Okay, coming on to the second question. It is 3 plus root 23 minus root 23. Okay, so what do you think, guys? It is a rational or irrational? Root 3 is a prime number and it is under root, so it can be a irrational number. But separately, we are asking about this whole. So we can expand it as root 23 minus root 23. So this gets cancel out. 3 is only left. So 3 is a rational number. As it can be represented as P upon Q, which Q is not equal to 0. And P and Q are co-prime integers. Remember this definition. This definition is going to help you a long way. Okay, coming on to question number third. Okay. Question number third is 2 root 7 upon 7 root 7. We have not seen yet multiplication and division in this root, but we will see it in the upcoming next section of this video. So what it is, it will simply get cancelled out. Root 7 will be cancelled out by itself. What is left? It is left as 2 upon 7. So it is a rational number. Yes, P upon Q, Q should not equal to P and Q are co-prime integers. And P and Q are co-prime integers. Okay, coming on to fourth question, which is 1 by root 2. Root 2 is an irrational number. So 1 by root 2 is also an irrational number. Okay. Coming on the fifth question, 2 pi. Okay. You know what is pi? Pi is nothing but 22 upon 7. It can be also written as 3.14. But when we divide it further, it is an infinity number which is non-repeating and non-terminating, which is non-terminating and non-repeating. So what it is a non-terminating and non-repeating number. So pi, the value of pi is 22 over 7. So this whole combination of whole becomes what it becomes. It simply becomes irrational. What it becomes? Irrational. So again we are writing an irrational. This is irrational. I am R. This is R, and this is irrational. Okay. Coming on question number 2. Okay. Coming on to the question number 2. Let me change the marker. Okay. The marker is very light. I hope so. Okay. The question number 2 is simplify each of the following expression. Okay. What we need to do is we need to simply simplify. Let me rub it. Okay. Or I should write it there. Just wait. Okay. Question number 2, simplify. In this we are going to see how to multiply, divide, subtract and add rational plus irrational numbers. Let's get see it. Question number 2, part first. 3 plus root 3 into 2 plus root 2. Okay, there is no symbol. So this simply means it is in multiplication with this. This first digit is in multiplication with the second digit. Okay. So let's get started. What we need to do? First understand how. The first digit is multiplied with the first digit of the second number. The first digit is again multiplied with the second digit. Now the second digit of the first number is multiplied with the first digit of the second number. Then the second number is multiplied with the second number. This is how multiplication takes place. Okay. So how we get it? 3 to we need to first multiply this. 3 to 6 into this 3 root 2 plus we need to multiply these to 2 root 3 plus root 6. We need to multiply these two. 3 to 6. So root 6. So this is your answer. Okay, for question number first. Okay, coming on question number second. Question number second is 3 plus root 3, 3 minus root 3. Can you see it similar to A plus B, A minus B? Can you see similar something? There's like A plus B, A minus B. कुछ तो दिख रहा है ना? So we can write directly or by simplifying, as I told you, this method, or directly by applying the identity. Okay, so by directly applying the identity, we get
a plus b minus a square minus b square, right? A square minus b square, right? B square, which is 6. Again, by solving it by this method, 3 into 3, 9, plus 3 root 3. This into this, my plus 3 root 3. This into this, root 3 into root 3, root 9. Okay, am I not mistaking anywhere? Yes, the minus sign needs to be implemented here. I was seeing I was mistaking something. Okay, plus minus cancel out. My root minus 3 is 3. So 9 minus 3, which is 6. I have verified it with both the terms by the simply a plus b, a minus b is equals to a square minus b square, by the identity as well as by the method I am solving. Okay, question number 3. Root 5 plus root 2 whole square. I think आप सभी को याद है what is a plus b whole square. It's a square plus b square plus 2ab. Okay, so we can write it by this also, by expanding through a plus b whole square, we get a square plus b square plus 2ab, right? So a square, which is 5, plus b square, which is 2, plus 2ab, root 5 root 10, 2 root 10. Okay, so this comes to be 7 plus 2 root 10. This is your answer. Okay, this can be further written as 2 5. No, this can be written as this one. So let me come 10. No, this can be written as this one. 2 5, right? Okay, coming on question number 4. Where I should do it? I should write it here and do it there, right? There is a lot of space. Root 5 minus root 2, root 5 plus 2. Okay, this is also similar to this one. A plus b, a minus b. It is all a concept of how you remember the identities which you have learned or which you are going to learn. It's basically in the second chapter, polynomial, but it's all about how you learn. Okay, polynomial linear equation main chapters are going to come here. Okay, I can see it, I can implement it directly. You can also implement it. Okay, it's a plus b, a minus b, a square minus b square, a square minus b square, which is 3. This is your answer. Okay, so I hope you guys understand it. Coming on to the question number 3. Okay, recall pi is defined as ratio of circumference, right, of a circle and its diameter d, that is pi c by d. This seems contradicted. The fact that pi is irrational. Okay, how will you resolve this contradiction? It's simply pi value is 22/7, which is an irrational number, but for our assumption in perimeter chapter we use it as 3.14 or 22.7. So what it comes to be is we use it for our calculation, but it's an irrational number. Okay, this was all the question number 3 was saying. Coming on question number 2, coming on question number 4. For question number 4, it is a long concept, so I'm going to make a totally different, new, fresh video for you all, so that you can understand the procedure, how to solve these type of questions. Okay, so we will be doing question number 4 in the upcoming videos. Link is in the description. Do check it out. Do not forget to check it out. Coming on question number 5. Rationalize the denominator of the following. So we have fractions, right? The basic rule of fractions is in the denominator. Let me tell you, this is the numerator upper side and this is the denominator, the lower side. The rule of the fraction states that there will be never a negative value in a denominator. What?
there will be never a negative value in a denominator. Also, there is another rule which states that there will be never under root in the denominator. Like we have written 1 upon root 2, this can never exist according to fraction rules. So to counter this problem, what we have done, we have come across a new term which is rationalize. Rationalize is nothing but multiplying denominator by its conjugate. Now what is conjugate? It's simply a value which is implemented by reversing the signs. What it is? It is simply a value which is come after reversing a sign. We will see in this. Now let's get started. Okay. So let's see how to perform these kinds of questions. Hope you guys are enjoying it. Do not forget to like, share and subscribe. आपका ही चैनल है भाई, कर लोगे तो आपके लिए भलाई है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर this 5, rationalize 1 by root. Question 5, first 1 by root 7. What we need to do is we need to simply multiply it. What we need to do is simply multiply it by root 7 in root 7. What it becomes? It becomes root 7, and 7 into 7 becomes 49, which is under root 49, which is 7. So this is your answer. Okay. Coming on to question number part second of this question, which is 1 upon root 7 minus root 6. Root 7 minus root 6. Now what is this? These are two irrational numbers in the denominator. As I already told, irrational numbers are not tolerated in the fraction. So what we need to rationalize the new term, which is simply multiply it by its conjugates. Okay. Now multiplying it by it simply becomes root 7 plus root 6. And when we multiply this by this, can you see? It is a plus b, a minus b. It's very simple. You will be using it in many terms. Now this identity is going to use so much of time. A plus b, a minus b. So what it is? A square minus b square, which is 6, which is simply 1. Okay, so it can be simply written as root 7 plus root 6. Okay, coming on question number 3, root 5 plus root 2. 1 upon root 5 plus root 2. Multiply it with root 5 minus root 2. Multiply it with root 5 minus root 2. What it becomes? It becomes root 5 minus root 2 upon a plus b, a minus b. It's as simple as that. A square minus b square. I am writing it direct. A square 5 minus b square 2, which is 3. It starts. Coming on to question number 4, which is root 7 minus 2. Coming on to question number 4, which is 1 upon root 7 minus 2. So this can be rationalized as root 7 plus 2. I think it's understandable. So root 7, sorry, I'm again mistaking. Root 7 plus 2. So what it becomes? It becomes root 7 plus 2. Now we need to multiply this by this. This is a similar part of a plus b, a minus b, but you need to stay a little conscious while dealing with this, because in this we were having root in both the numbers, but in this we are having root on single number. So we can apply that, but be conscious. Okay, like galat na kar do aap. Okay, so a plus b, a minus b. A square 7 minus b square 4. 7 minus 4, 7 minus 4, 3. So this is your answer. Okay, catch you up in the next one. We will be doing question number 4. Do not forget to watch question number 4. It is in the description. We will be doing it. Thank you. If you like the content, do not forget to like, share and subscribe.
So hello everyone, welcoming you to another video of number system exercise 1.6 class 9. Okay, so before going to exercise 1.6, what are we going to understand? That we are going to understand laws of exponent. We have studied it in our previous classes, not in our previous classes but in our previous classes. Like we have studied in class like 8th, 7th, 6th, right? Let us recall them. I know I have written it, but still I will be going to ask you, what is a to the power m into a to the power n? I know many of you must know that. Like, this is not a thing that should be forgotten. Okay, so a to the power m into a to the power n is equals to a m plus power n. Okay, sorry, I pronounced it wrong. A to the power m into a to the power n is equals to a power m plus n. The second rule is a to the power m whole to the power n is equals to a m into n, means power here in the second rule gets multiplied. In the first rule they were added. In the third, a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power m minus n. Now why this is so? Right? In this, powers gets subtracted, where m should be less, where m should be, more than n, not less, more than n. Yeah. A to the power m into b to the power m is equals to a into b power m. I know a, last one, okay. A upon 1 upon a power n is equals to a power minus n. I know these are like, what are you saying? Let us go through them one by one with the help of exercise 1.6. मुझे पता है आप सभी को ये याद होगा, लेकिन बोलने में थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है. So let's get started. I hope आप सभी के पास NCERT बुक होगी. Okay. So yes, exercise 1.6. The very first question is find 64 power half. Okay, I hope this is visible. 64 power half. Let me check if it is visible or not, right? So yes, this is visible, right? Yeah. So find 64 power half. This is power, right? Power. Power. Okay. So what we need to do is we need to simply prime factorize 64. कहाँ करो? यहाँ करो, यहाँ करो. कहीं कर लो, मैं माथ की जगह है. ठीक है, 64 divided by 2, what we get? 32. Okay. Prime factorization. What are we doing? We are doing prime factorization. Okay. Now 32 by 2 we get 1, and we get 16, right? Then again 16 8 times, right? Then again 4 times. Then again 2 times. Then again 1. Okay. This is the prime factorization of 64. Like 64 can be prime factorized in this way. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this can be written as 64 can be written as 2 to the power 6. That was already in power. Okay. So this can be written as 64. Now 2 cancel out by 6. How many times? 6 cancel out by 2. How many times? 3 times. So 2 to the power 3, which is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. This is the answer. Getting my point? Yes? Coming on question number 2nd. Okay, the question number 2nd is 32 to the power 1 by 5. If we are smart enough, we should know we have already prime factorized 32 here. Okay, now we only need to count its factors. 1, 2, 3, 4, 5. So, this is 32 can be written as 2 to the power 5 into 1 upon 5. This is one power, okay? 5 gets cancelled out by 5. 2 to the power 1, which is 2. Okay? Coming on question number 3rd. 125 to the power 1 by 3. Okay? 125 to the power 1 by 3. So I hope this is visible.
Let me once again check it if it's visible. Yeah, it's visible, right? Okay. So this number cannot be divided by 2 because the ending digits are not even numbers. Okay, so this will be divided by this is 125. It is 3 5, like added 5 6 7 8 5 6 7 8. So this will also be not divided by 3 4. So this will be divided by 5. Okay, 5. Okay, so 10 2 times, 2 left, 25 5 times. Okay, then again 5 times, then again 5 times. Okay, so this 125 can be written as 5 to the power 3 into 1 by 3, which again gets cancelled out and be written as 5. In both of the three, which property we have been using till now? Tell me, which property we have been using till now? The second one. Okay, getting my point? Now coming to question number 2. The first question has been added. The first completed. Question number 2. Where should I start? I think I should start from here. Right? Question number 2. Question number 2. Find 9 3 by 2. Okay. 9 power 3 by 2. Okay. So 9 can be factorized as, you know that 3 times. So 3 3s are 9, right? 3 3s are 9. So 3 power 2, 3 into 2 gets cancelled out, right? Right? So 3 power 3, which is equals to 3 power 3, which is equals to, समझे नहीं आप कैसे है ना? 3 power 3. अरे 3 power 3 simply means 3 into 3 into 3. So 3 into 3 is equals to 9. 9 into 3 is equals to 27. This is 27. Okay. Coming on question number 2. Okay. 32 to the power 2 by 5. Question number 2. 32 to the power 2 by 5. If I have not written it wrong, yes. So 32 हमने अभी किया था. 32 को we can be written as 2 to the power 5 into 2 to the power 5. 5 gets cancelled out by 5. 2 power 2, which is 4. Yes, correct. Which is 4. Yes, correct. Now question number 3. I hope these are easy questions. You can do it by yourself. Okay, so थर्ड वाला आप करिए, मैं फोर्थ वाला करती हूँ. उसमें थोड़ा माइनस का साइन है ना, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है ना. तो थर्ड वाला आपकी, मैं फोर्थ करती हूँ इसका, है ना. तो इसका फोर्थ करते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज 125 पावर -1/3. 125 हमने अभी किया था. कहाँ किया ये? Which can be written as 5 to the power 3 into -1 into 3. 3 gets 3. -1 means this is simply 5 to the power -1. This rule, which can be written as 1/5. Getting my point? Getting? These are simply implementations of these rules, right? Now coming on to the question number 3, simplify. Question number 3, simplify. We should directly write question, right? 2 power 2 by 3 into dot into the same thing. 2 power 2 by 3 upon 2 power 1 by 5. Okay. So कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं क्या? ए पावर एम अलग अलग है पावर, है ना. कुछ तो सिमिलैरिटीज दिख रही हैं. तो इसमें क्या होगा? पावर इसमें हमें प्लस का दिख रहा है ना, तो इनकी पावरों को हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, क्योंकि बेस हमें सेम दिख रहा है.
बेस हमें सेम दिख रहा है, पावर डिफरेंट दिख रही है, तो पावर को हम ऐसे करते हैं प्लस करते हैं, तो 2/3 + 1/5। आई थिंक आप सभी को आता होगा। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे विच इज 15 बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। ओके 15। ओके सो इट इज ये 5 टाइम्स जाएगा तो ये भी 5 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 3 टाइम्स जाएगा तो ये भी 3 टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा? सो ये आएगा 13/15। जो आंसर है 2^13/15। आई डोंट नो मार्क को क्या हुआ, बट ऐसे है ना आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 देखें या फिर 3 देखें या फिर सारे ही देख लें। जैसे नेगेटिव का तो कहीं नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। बताइए करें सॉल्व? चलो करते हैं। कोई एक बता दीजिए, ये कर लेते हैं लास्ट वाला। चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ये इस वाले एल्गोरिथम से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला वो भी इससे होगा। फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला वो इस रूल से होगा, क्योंकि इसमें पावर सेम है। इतनी हिंट दे रही तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? सो करते हैं। ये थर्ड वाला कर देते हैं, मुझे लगता है थर्ड वाले में गलती करोगे। यहाँ पे थर्ड वाले के लिए ही मेरे सबसे स्पेस है। सो 11 पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1/4। ये मार्कर है वो मार्कर नया लाएंगे तभी हम, है ना? मार्कर में धोखाधड़ी कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो 11 पावर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं इस रूल के हिसाब से? अगर ये ऊपर चला जाएगा 11 पावर में 11 1/2 एज इट इज 11 इस रूल के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा तो 11 माइनस की पावर 1/4। तो अब तो ये इसकी तरह सेम सेम दिख रहा है ना, कुछ बेस सेम ऊपर की डिफरेंट। तो ये इधर प्लस का साइन होता है, नॉर्मल साइन विच इज प्लस, तो इधर माइनस कर देंगे। 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम 4 1 सो 2 minus 1 2 minus 1 what is 2 minus 1 1/4। आई होप मैंने सही किया। 2 minus 1 is 1। कुछ गलती करी है क्या? नहीं सही तो है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 1/4 पावर 1/4। अब देखो मार करने में धोखाधड़ी कर दी, वरना सेकंड और फोर्थ भी कराते हैं, लेकिन आई होप आप कर लो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। So, hello guys, today we are going to study class 9 number system exercise 1.3 question number 3. Now you must be thinking कि भाई ये क्वेश्चन आपने बोर्ड पे क्यों लगाया? क्योंकि this question require a pen, a pencil, a scale, a protractor and a compass. इसलिए ये हमने बोर्ड पे नहीं कराया, ठीक है ना? तो अब हम इसे समझते हैं ना कि क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो मुझे लगता है सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, √5 को है ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर, है ना? अब भाई हमने तो रेशनल नंबर सीखे, तो नंबर लाइन पर इर्रेशनल कैसे करें? तो चलो सीखते हैं ना। पहले तो हमें है ना सबसे पहले स्टेप, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर है ना स्टेप वाइज लिखें। अगर अच्छे नंबर मतलब फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो स्टेप वाइज लिखें। तो ऐसे है, स्टेप 1 कंस्ट्रक्ट आ लाइन। अब लाइन देखो, मैं अगर है ना इसमें 0.5 √5 दे रखा है ना, √5 यहाँ है नहीं। चलो अभी लाइन से पहले एक और कंसेप्ट समझाते हैं आपको। वो होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सीधी लाइन है, ठीक है ना, थोड़ी हिल गई है, लेकिन अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उस ट्राइंगल की कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना? कोई भी एक एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो
तो ये जो बेस होता है इसे हम कहते हैं बेस स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस ये क्या हुई, हाइट स्क्वायर, हाइट भी बोल सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली काटती है लाइन को, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस, क्या हुआ, हाइपोटेनियस, है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो हमसे क्या कहती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। मतलब बेस स्क्वायर, बेस की कोई वैल्यू होगी अगर इसमें केस में नहीं दे रखी है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस तो थ्योरम होती है, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, राइट दिस वे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओके। सो ऐसे हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि आगे क्या, ये जो रूट 5 है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ कैसे, अगर हम इसका बेस लेट अस सपोज 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये हमें थोड़ा छोटा लगता है तो 1 ले लेते हैं ना, और परपेंडिकुलर इसका 2 ले लें, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर इज 1, और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 5 अंडर रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। क्या है, रूट 5 क्या कर रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है ना। तो चलो अब क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं ना। तो ये जो होगा ना, ये जो वैल्यू आई ये आएगी रूट 5। अगर ये 1 का हुआ और ये 2 का हुआ तो ये जो आएगी ये वैल्यू आएगी रूट। अभी सर नंबर लाइन पे ये यहाँ पे तो रिप्रेजेंट हो गया, ये हुई लाइन रूट 5, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे करना है, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्केल। अब स्केल पे अगर देखो मैं यहाँ से है ना 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाती हूँ, तो ऑब्वियसली आपको देखने में समझ में नहीं आएगा ना, है ना, मतलब बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, है ना, थोड़ा इन लार्ज वे में समझते हैं। तो इसके क्या है, हमें पॉइंट्स लेने ही बहुत है ना, जैसे इसको है ना लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इसको ऐसे ले लेते हैं ना, यहाँ तक ले लेते हैं। अब 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट लेंगे, मतलब 2 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि है ना अभी आपको समझने में, अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाए तो बहुत छोटा छोटा हो जाता, समझने में थोड़ी क्लियरेंस नहीं आती। आप 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, आप 1 का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है बस, है ना। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से है ना 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब यहाँ से 2 यूनिट, तो ये यहाँ पे आएगी, है ना, यहाँ से 2 यूनिट, सॉरी, तो यहीं पे आएगी, गलती से हो गया, तो ये 2 यूनिट यहाँ पे आएगी। अब हम यहाँ से क्या करें, हाफ से ज़्यादा लेके, जैसे 1 पे यहाँ पे इसका हाफ आएगा, हाफ से ज़्यादा लेके इस पे क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी हिल गया ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ना। OA का हमें एक बाइसेक्टर बनाना है ना। सो इन पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये तो O हो गया, 0 नहीं, O हो गया, मतलब 0 तो है ही है, लेकिन चलो लिख लेते हैं ABCD, है ना। तो अब हमें क्या करना है, 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, या तो हम इससे भी कर सकते हैं। अब आप ये देख लेना आपके स्कूल में कैसे कराया है ना, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना हो सकता है कोई टीचर्स इससे सिखाते हैं, तो मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए इससे सिखा देती हूँ, है ना, या फिर इससे सिखाऊँ, बताओ। चलो अभी इसमें सीख लेते हैं, अगली वीडियो में दूसरे सीख लेंगे, है ना। तो है ना ये 90 हो गया ना, तो हमने इस पे क्या कर दिया, 90 ड्रॉ कर देते हैं ना। जो मैंने पॉइंट इस पे रखा था ना, कि नहीं रखा था, रुको, हाँ ये पॉइंट इस पे रखा,
तो अब ये पॉइंट हो गया 90 है ना, ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री अब है ना, जैसे मैंने बताया बेस 1, ये बेस 2 भी हो सकता था, ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 भी हो सकता, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबल है। क्या है? ये दोनों इंटरचेंजेबल है ना। तो यहाँ से बेस 1 लेके करें 2 लेके करें? चलो बेस 1 लेके ही कर लेते हैं ना। जब यहाँ पे बेस 1 लिया है तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसको मेजर करो, यहाँ से इसको मेजर करो, ये 2 सेंटीमीटर है, इससे यहाँ पे आर्क लगा दो। यहाँ से ये आर्क लग गया, ठीक है, ये 2 पे आया था तो ये आर्क लग गया, ठीक है। ये क्या हो गई डिस्टेंस हमारी? ये डिस्टेंस हमारी हो गई 2 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है हमारी 1 सेंटीमीटर। मतलब सब में ना इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, किसी में अनइक्वल डिस्टेंस होगा ना तो फिर आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा है ना 1 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे ना, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये कर दिया है हमने, तो ये जो है ना, ये हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? √5। क्या आएगा? √5, है ना। अब हमें क्या करना है? ये जो √5 आया है इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये तो ट्रायंगल पे प्लॉट हो गया ना, इसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे? ये जो आपकी डिस्टेंस आई है यहाँ से, ये इसको इस पॉइंट से लेके इधर प्लॉट कर देंगे। तो ये हो गया आपका √5। क्या हो गया? √5 ऑन नंबर लाइन। क्या हो गया? √5 ऑन नंबर लाइन। थैंक यू गाइस, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। So hello guys, today we are going to understand number system class 9th exercise 1.5 how to represent 9.3 on number line, right? अब कोई भी नंबर है ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो हम, जैसे हमने एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, शायद 1.2 थी, तो उसमें सीखा था, वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं हुआ तो क्या? तो क्या वो हम आज सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जितने भी अंडर रूट में दे रखी होगी वैल्यू, उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, रूलर, है ना। तो इसकी है ना 9.3 की सेंटीमीटर की है ना लाइन खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, है ना। 9.3 सेंटीमीटर की लाइन, इसको हमने लिख दिया B, इसको लिख दिया A, ये हो गया, है ना, ये हो गया AB। अब AB को अपने कन्वीनियंस के लिए 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हम AB को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, दिस पॉइंट ऐसे इसका है ना, इसको ऐसे कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ये हो गया C पॉइंट। क्या हो गया? C पॉइंट। अब हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब 2 लाइन इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे विद मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आधे से नहीं कर सकते, थोड़ा क्या करना है? इनलार्ज करना पड़ेगा। क्या करेगा? इनलार्ज, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो हमें हाफ से ज़्यादा लग रही है, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर मार्क करना है, एक आर्क नीचे मार्क करना है ना। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब A से मार्क करो ये आर्क, एक आर्क ऊपर मार्क करो और एक आर्क नीचे मार्क करो। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये इक्वल हाफ में बन गए, है ना। अगर हम इस पॉइंट को O नाम दे दें तो AO इज इक्वल्स टू OC, है ना। ठीक है, तेरा। तो ये हो गई हमारी इक्वल हाफ्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है? सेमी सर्कल। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके यूटी या फिर किसी भी एग्जाम में, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1, मेक अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। स्टेप 2, एक्सटेंड इट 1 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर, है ना। ऐसे लिखना, तो ऐसे आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर स्टेप 3 में क्या है? ये वो एक्सटेंड होगा। स्टेप 3 मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप 4 मेक अ सेमी सर्कल विद AO, है ना। तो ये है ना, थोड़ी अगर
मतलब टीचर को अच्छा लगता है जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो बच्चे ने ये सब लिखा होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पूरे नंबर अवार्ड करते हैं, पूरे में से पूरे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बी और सी है ना, बी पे हमें 90 डिग्री एंगल मार्क करना है, ठीक है ना। क्या करना है, बी पे 90 डिग्री एंगल मार्क करना है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री एंगल मार्क करना है। अब देखो ये हो गया 60, सॉरी ये यहाँ से है ना, यहाँ से लेंगे इस लाइन से, तो ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 60 120, 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 इज 90, है ना 90। सो ये आपका किस पे कट हो गया, ये बी पे क्या हो गया, 90 डिग्री पे कट हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री पे कट हो गया। ये समझ रहे हो आप, समझो बात को, है ना। तो ये 90 डिग्री पे कट हो गया। ये जो वैल्यू आई है ना, ये है √9.3, लेकिन वही बात नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है, तो क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, क्या करते हैं, इससे थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड होगा, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस पॉइंट को 0 मान लिया तो ये 1 है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ना, यहाँ तक थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड सो ऑन, है ना। तो आपको दिख रहा है ना, तो ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो अब इसकी बहुत सिंपल है, अभी अब तो ये हमने पहले भी किया था ये वाला स्टेप, इसकी यहाँ से ये है, इसको यहाँ पे काट दो, इसको यहाँ पे कटवा दो, है ना। ये जो 9.3 आ रहा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, इसको यहाँ पे कटवा दो, है ना, सही आ रहा है। तो देख लेते हैं, हमने एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है ना, हाँ जी एक्यूरेट में। तो ये है ना थोड़ा सा मतलब शायद कंपास में कोई एरर है, तो ये हल्का सा थोड़ा 3 के पीछे कट होता है ना, ये क्या होता है 3 के पीछे कट होता है, तो ये है ना, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड 9.3 और नंबर लाइन, तो ये आपको नंबर लाइन पे हो गया। थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट में। थोड़ा सा पीछे होता है ना, ये होता है √9.3, शायद कंपास में कोई एरर है या फिर हमसे कहीं लिया हुआ, तो ये है आंसर, ठीक है। थैंक यू। So hello everyone, this is another video of number system, points to remember. So we are going to cover your doubts. You can drop your doubts in comments. I will be trying to answer all your doubts. Okay, points to remember. Okay, you can read this, go through this, and I will be also explaining, going through these points one by one. A number R is called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, are co-prime integers, and P, Q are co-prime integers. Okay, make it co-prime. It's written integer. Make it co-prime integers. Co-prime means both the numbers have common multiple only one. Okay. Okay. So this is it, and Q should not equals to 0. This is most important. You can write with, you can take a pen or pencil and write co-prime. Q is not equals to 0 तो लिखा है, but you can also write co-prime integers. Okay, in 10th it will help you a lot. This point will help you a lot. Okay, the second point is a number S is called irrational number if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0. Means एक ऐसे नंबर है, वो irrational नंबर है अगर वो P upon Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने जब टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि ये नंबर्स इरेशनल होते हैं और ये P upon Q फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि कौन सा था वो, आई मीन टू से दे वर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लाइक पाई इज एन इरेशनल नंबर। वो तो हम उसकी 22.7 वैल्यू ले लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, बट इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, थर्ड पॉइंट, द डेसिमल एक्सपेंशन for a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expression is terminating or non-repeating is rational. अगर वो terminate हो जाएगा मतलब पूरी तरीके से divisible हो जाएगा और non-terminating recurring है, मतलब वो हो जाएगा बार बार यही आ रहा है, तो वो P upon Q मतलब rational form में लिखा जा सकता है। बाकी कोई नंबर
नहीं लिखे जा सकते, ये बता रखा है स्लाइड में, ठीक है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डेसिमल एक्सप्रेशन for irrational number is non-terminating, non-recurring. That's what I just told you in the second point. Non-terminating, non-repeating. Moreover, a number whose decimal expression is non-terminating, non-repeating is irrational. I told you this. All the rational and irrational number make up to collection of real numbers. Rational plus irrational is equals to real. ठीक है? Yes. Sixth point, there is a unique real number corresponding to every point on number line, also corresponding to each real number there is a unique point on number line. It simply states that number line पे है ना ये चीज सब चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है ना, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई है नंबर लाइन पर रियल नंबर का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, if r is a rational number and s is a irrational number, then r plus s and r minus s are irrational numbers and rs and r upon s are irrational number। मतलब सिंपल सी बात है, एक रेशनल नंबर ले लो एक इरेशनल ले लो, तो भाई कैसे हो सकता है वो कंबाइंडली तो इरेशनल कहलाएगा। अगर उनका प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, कंबाइंडली तो वो इरेशनल होगा, कैसे हो जाएगा। मतलब देखो इसको थोड़ा समझाते हैं। 2 और एक रेशनल बताओ, इरेशनल 3.14 पाई, ये नंबर है कॉमा है 2 3.1, ये तो पाई लिख दिया मैंने, इसको ऐसे नहीं होता करते हैं ना, इसे करते हैं, मतलब कंबाइंडली है ना, नॉन टर्मिनेटिंग 2, 2.1489 है ना, 589, मतलब ये सो ऑन, मतलब नॉन रिपीटिंग है, सो ऑन। अगर इसका एडिशन करें तो ये नंबर तो वैसे ही चलता रहेगा, तो वही बता रखा है कंबाइंडली वो इरेशनल ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है प्रॉपर्टीज, है ना, लाइक रूट ए कैन बी रिटन एज रूट ए रूट बी, है ना। ये सब मैंने जब आपको एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो बताया था, है ना। तो फोर्थ में आ रहा है रेशनलाइज। रेशनलाइज ये याद रखना कि उसके है ना मतलब कॉन्जुगेट से करते हैं, कॉन्जुगेट मतलब जैसे साइन चेंज करके करते हैं, मतलब आप इतने सारे शब्द है ना भूल जाओ, तो ये समझ लो अगर रेशनलाइज आ गया तो जो डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में है 2 प्लस √2 प्लस √7 है, तो इसमें रेशनलाइज करेंगे √2 माइनस √7। बस इतना ध्यान रखो बस, है ना, बस इतना ध्यान रखो, शब्द तो आप भूल जाओगे बार बार। 10th वाला पॉइंट है ये सब आइडेंटिटीज, थोड़ी देर पहले पढ़ाई आइडेंटिटीज, मतलब एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कैच यू अप इन द नेक्स्ट। थैंक यू।